हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्त को सरस्वती जी स्वागत। आज आम ऑडिटिंग पार्ट 2 डिस्कशन पार्ट 2 क्वेश्चन डिस्कशन करवा जोटा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऊपर रहिबो। ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड एथिरे भी 20टा क्वेश्चन डिस्कशन करवा बहुत जल्दी करवा। वन रहा अंडर द ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 5 जेटा कोन आम कौन जानते आम कौन जानते ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ओके, जोटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एविडेंस इज जनरली कंसीडर्ड द मोस्ट रिलायबल आ भितर कोटा पचारा कन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन। कौन हम आमर हम फिजिकल एग्जामिनेशन हम जोटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एविडेंस इज जनरली कंसीडर्ड द मोस्ट रिलायबल फिजिकल एग्जामिनेशन हम। सेकंड, अकॉर्डिंग टू ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड रिवाइज्ड, व्हाट इज द ऑडिटर्स प्लानिंग प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी आम 6 नंबर पढ़ी रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंटरनल कंट्रोल कौन रहिबो? to assess the design and operating effectiveness of internal control, to test all controls to ensure they are operating effectively, to rely entirely on the client's internal control system. Last is to express an opinion on the effectiveness of internal control. What have answer? Answer of it has to assess the design and operation effectiveness of internal control. इंटरनल कंट्रोलटा डिजाइन आ ऑपरेटिंग इफेक्टिव जेता भल हम से आम ऑर्गेनाइजेशन पे से बेटर हम। नेक्स्ट देखिबा, व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट अंडर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 9 द ऑडिटर शुड एक्सेस। ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 9 ने हमर कोन अछि के कहबो? हमर 9 ने अछि यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। यूजिंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 9 टा होची कोन? यूजिंग कौन कहली भूली गेली, ऑडिटिंग द यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ओके, इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वर्क मेथोडोलॉजी एंड अजम्पशन, ऑल ऑफ द। कौन हम आंसर? हमार आंसर हम ऑल ऑफ द। सिंपल दिन। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 10 नंबर कौन अच्छी? व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स अनदर ऑडिटर। ऊपर थिला कौन यूजिंग एटा होची कौन थिला? एक्सपर्ट मानकर आम नियंती, एक्सपर्ट मानकर नियंती स्टैंडर्ड एटा होची हमर एक्सटर्नल आ अदर ऑडिटर्स नवा, अदर ऑडिटर नवा नहीं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन कहूची? अदर ऑडिटर यूजिंग द sorry, in the context of auditing standard 10, when using the work of another auditor, the principal auditor should obtain sufficient appropriate evidence rely entirely on the work of an other auditor, perform substantive procedure on the all significant accounts, assess the work of an other auditor, and if necessary perform additional procedure. तापरे डी होची issue a qualified opinion on the if the work of the other auditor is unsatisfactory. हमर कौन हम आंसर? हमर आंसर हम सी, assess the work of an auditor। पूरा एटा डायरेक्ट लिख दीजिए, तेणुकर एटा सी इज आंसर। अदर ऑडिटर इफ नेसेसरी परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। तापर 5 नंबर देखा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 ने कौन अच्छी आम कौन पढ़ी? ऑरा पढ़ी मन अच्छी। ऑरा आमर कौटू आरंभ होची? 8 रु आरंभ होची, 8 रु 14 जाए। ए डबल यू डबल आर डबल ए नहीं कि तार 11 आमर कौन आसीबो? आर आसीबो गोटे, फास्ट आर आसीबो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, बार आसीबो रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। एटा हम पढ़ी दबा 11टा। रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इथे लिखा है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट auditing assurance standard, which of the following is not a typical management representation? Management has disclosed all the related party transactions. Management has provided all information relevant to the preparation of a financial statement. Management has assessed the going concern assumption. Management has designed and implemented effective internal control. कौन हम आंसर?
आंसर हम मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से सब जाक डिस्क्लोज करवा दरकार सिंपल सरला नो बकवास अंडर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 13 ऑडिट मेटालिटी एटा कहला ऑडिट मेटालिटी होचे एतरे द ऑडिटर्स अजम्पशन ऑफ मेटालिटी शुड consider the nature of the entity, the ownership structure of the entity, the financial performance of entity, all of the कौन हम आंसर हमरो क्वेश्चन देखि दियो आउतरे आंसर हम देखो ऑडिट मेटालिटी रे हमरो कोन आसुची सब जांक आसीबो सिंपल दिन हम सब जांक आसीबो नेचर ऑफ द एंटिटी ओनरशिप स्ट्रक्चर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनटा नेले जाके हम कोन कर परिबा एंगेजमेंट कर परिबा ओके मेटालिटी कंफर्म कर परिबा अकॉर्डिंग टू ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 14 analytical procedure 14 ଅଛି कोन analytical procedure which of the following is not a typical analytical procedure आबितर कोटा नुआ comparing current year balance to prior year balances calculating ratios and trends reviewing accounting estimates for the reasonableness confirming accounting receivable कोन हबा आंसर आंसर हबा हमर confirming accounts receivable जोटा कि not a typical analytical procedure एटा कोटे analytical procedure भीतर हमर आसुनी नेक्स्ट देखियो 8 नंबर which when considering the going concern assumption under section under auditing standard 16 the auditor should assess the entity's ability to continue as a going concern for period of 1 year 12 months from the balance sheet that identify the period period covered by the financial statement कोटा हबो आंसर हमर आंसर हबो 12 month हम 12 मास रे करंती ना 12 month from the balance sheet date 12 month from the balance sheet date ओके हमर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 16 कोन कहूची के कोइ परियो एठी लिखा है समस्त कोइ परियो ओके 16 कहूची गोइंग कंसर्न सिंपल दिन एटा पूरा मन रखिबो 16 हला कोन गोइंग कंसर्न तापरे 17 ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 17 कोन हम जानचंती क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क एटा लिखा है ऑलरेडी क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑल ऑफ दिस कोटा हबा आंसर हमर आंसर हबो ऑल ऑफ दिस हबा आंसर नेक्स्ट देखिबा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 18 ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिखा है जेटी आपण मन त मन रखिबे ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स the auditors responsible for accounting estimates includes assessing the reasonableness of management's accounting estimates तापरे होची तापरे कोन कहला making accountable accounting entity estimates on the behalf of management assuming responsibility for the accuracy of accounting estimates none of the कोटा आंसर एटा auditing estimates भीतर assessing the reasonable management accounting estimates balance making accounting estimates on the behalf of management assuming responsibility for the accuracy of accounting estimates कोड हबा आंसर एटा नॉन ऑफ दिस हबो कोटा भी हबो ना भीतर ओके तेनु करी से टिके डाउट होतला तेनु करी एटा जणा पड़ला जे सब जाक आ भीतर कोटा भी हबो नै अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 19 subsequent events कोन कहला 19 ने कोन आछि subsequent events the auditor's responsibility for the events occurring after the balance sheet date extend to go through so date of the auditor's report the date of the financial statement the date of the auditor complaint date of the entity's financial end year कोटा हबो आंसर हमरो सिंपली आंसर हबो आंसर the date of the entity's financial year end subsequent events से इट आसीबो नेक्स्ट देखा 12 नंबर ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 20 नॉलेज ऑफ द बिजनेस कोन हबो नॉलेज ऑफ बिजनेस एतरा आसला द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज बिजनेस एंड आइडेंटिटी टू assess audit risk to identify potential areas of misstatement evaluate the appropriateness of accounting policy all of the above answer simple दिन पूरा मन रही जो तापरे when consisting law and regulating under कोन कहला considering law and regulations under auditing standard 21 the auditor's responsibility is to
कौन कहला obtain absolute assurance that the entity has complied with all laws and regulations. Sorry. Design audit procedure to detect non-compliance with laws and regulations that have a direct effect on the financial statement. Rely on the entity's internal control to prevent non-compliance with the laws and regulations. None of these could have answer. Our answer hobo A. Okay, कौन होगा answer? Answer होगा A. Obtaining absolute assurance that the entity has complied with all laws and regulations. এটা মনে রাখিয়া দরকার none of this নুহ কি ଅଦର କୋଉଟା ନୁହଁ ତାପରେ 13 ଯିବା 15 ଯିବା ନା 14 ଯିବା under assurance standard audit assurance standard 22 initial engagement opening balance এটা হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ডটা the auditor's responsibility for the opening balance is to obtain sufficient appropriate audit evidence to express an opinion on the opening balances, rely on the work of the procedure auditor for the opening balances, performing subsequent procedure on the all opening balance. कौन हवा आंसर? हमारा आंसर हवा none of this. Simple जिनिस एवला क्वेश्चन ही पड़िबो. Okay, next देखो according to audit assurance standard 23 related party the auditors should perform procedure to identify all related party transactions that may have material effect on the financial statement, related party transactions that are disclosed in the financial statement. None of these could have answer. हमारा आंसर होगा B. related party transactions that may have a material effect on the financial statement. Okay, तापर 16 number देखिबा audit assurance standard 24 audit consideration relating to entities using service organization. The auditors should obtain sufficient appropriate evidence to कौन होगा आंसर well assess the risk of material misstatement due to the use of the service organization, obtain direct evidence about the service organization's control, relay entities on hello